welcome back to my channel. So firstly, if you are wondering about my makeup, it will come on my Instagram, so don't forget to follow me there. Link will be in the description box. And secondly, a beautiful giveaway is running and which will end on 1st June, so don't forget to participate because time is running out, and all the rules and the gifts are in the description box. Click the link and you can get everything. So in today's video, I'm going to be sharing with you guys how can you remove dark patches from your underarms and how to get rid from body odor, because we girls love to wear sleeveless tops and dresses, and if your underarms looks dark and patchy, you will not going to look beautiful. So if you are interested and want to see these DIY techniques, without further ado, let's get started. Okay, so for that you need baking soda, Colgate and lemon, not baking powder, baking soda. So first I am going to take 1 full tablespoon of baking soda. As you can see, मैंने full tablespoon लिया है. And now I'm going to take Colgate. So this is a pure white Colgate जो होता है वो. I'm not going to take any blue or red वाला जो Colgate होता है, not that. So take pure white का जो Colgate होता है वो, and I'm taking like half tablespoon of Colgate. I know the quantity इसलिए मैंने direct ही लिया है. And now I'm going to mix lemon. So for that, as you can see, I'm taking 1/4 of lemon. So first I'm going to mix little bit of lemon juice. तो लेमन एंड सोडा जब मिलता है तो ऐसे ही फॉर्म होता है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स इट. तो जब आप फर्स्ट इसे मिक्स करेंगे तो ये ऐसे पाउडरी फॉर्म होगा, एज यू कैन सी. बट फर्स्ट में ज़्यादा एकदम लेमन मत लीजिए, थोड़ा ही लीजिए. नाउ आई एम गोइंग टू टेक लिटिल बिट ऑफ मोर लेमन जूस, जो 1/4 में था वही मैं ले रही हूँ. एंड नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स इट अगेन. एंड नाउ यू कैन सी दैट ये पेस्ट फॉर्म हो रहा है, एंड दिस इज़ द परफेक्ट कंसिस्टेंसी. सो दिस इज़ नॉट एक्सट्रीमली लिक्विड और नॉट एक्सट्रीमली powdery. As you can see, ये paste form हो रहा है, and our mixture is ready to apply. Okay, so this is my underarms right now. You can see that I have a little bit of patchiness, which is common. Now I'm going to apply that paste. So this is the paste. Now I'm going to apply it. So first I need to remove all my finger rings. सो एप्लीकेशन इज डन. मैं इस साइड अप्लाई नहीं करूँगी ताकि मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखा पाऊँ. एंड थोड़ा सा एक ईचिंग सेंसेशन फील होगा, विच इज़ कॉमन बिकॉज यहाँ पर लेमन है एंड बेकिंग सोडा भी है, विच इज़ वेरी कॉमन. डोंट वरी अबाउट दैट एंड लीव इट फॉर एटलीस्ट 5 to 10 minutes. आई नो इट्स वेरी पेनफुल, लाइक ऐसे करके आपको 10 minutes तक रखना पड़ेगा, बट बिलीव मी इट विल वर्क. सो आई विल बी राइट बैक आफ्टर 10 minutes. ओके, सो आई एम बैक. नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव दिस. सो एज यू कैन सी, मैंने कुछ किया नहीं है. सो यू कैन सी दैट कुछ लगाया भी नहीं है कि ताकि ये थोड़ा सा डार्क दिखे. नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव दिस एंड मैं वेट टिश्यू इस्तेमाल करूँगी बिकॉज अगर मैं यहाँ पर पानी लाई तो वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा. तो मैं अभी इसे रिमूव करूँगी. नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव दिस एंड यू कैन सी द क्लियर लाइव रिजल्ट. ओके, तो मैंने फुल रिमूव कर लिया है एंड लुक एट दिस. यहाँ पर कुछ फाउंडेशन या फिर कुछ नहीं है, जस्ट टू शो यू दैट मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया है. सो एज यू कैन सी, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द लाइव रिजल्ट. सो होल्ड टाइट. सो लुक एट दिस साइड मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया है एंड दिस साइड मैंने बस एक ही बार इस्तेमाल किया है. जस्ट 10 minutes मैंने रखा है एंड लुक एट द डिफरेंस. सो एज यू कैन सी, मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया है एंड इस साइड भी मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया है. दिस इज प्योर अ लाइव रिजल्ट. यू कांट एक्सपेक्ट दैट कि एक ही बार में आपकी फुल जो पैचीनेस है वो रिमूव हो जाएगा, बट यू कैन क्लियरली सी दैट एक ही बार में कितना ज़्यादा पैचीनेस रिमूव हो गया है. बट इस साइड पैचीनेस अभी भी है. So as you can see the clear live result. So yeah, I hope you like this. So yeah, that's it for today's video. Hope you have liked it. If you did, don't forget to like this video and also don't forget to subscribe to my channel and don't forget to participate on giveaway. Click in the description box, एक link होगा giveaway करके. Click that link and you can get all the rules and gifts also. So do participate and don't forget to comment down below कि ये technique आपको अच्छा लगा कि नहीं. Do this technique and after doing, do let me know if you liked it or not. So see you on my next video. Till then, bye, stay happy and the most importantly, stay safe.